students, a very warm welcome to the class. How are you all? Hope you are fit, fine and doing great. And I'm sure you are excited to learn with me. So myself Divyani Shukla, your SST teacher, and today I'm going to start a very new chapter, which is your chapter number 13, the revolt of 1857, our freedom struggle. So in this chapter, we are going to study about the revolt of 1857. In the year 1857 is the year when we achieved freedom. Also, we will study about how we have achieved our freedom after many years of struggle and which people are involved in this in achieving freedom. So let's begin with this interesting chapter build up. Read the poem and answer the questions. So let's first read the poem. Swadeshi, a call so strong to right the British wrong. Use our own, the people cried. With Indian pride, they stood side by side. From villages to cities wide, the message spread with fiery tide. Boycott foreign goods, embrace the local. With every thread, they broke the yoke full. Students, women, all took part with unity and a patriotic heart. Swadeshi taught us to be free and fight for our land's destiny. Moving to the first question, what did the Swadeshi movement encourage people to use? It encouraged people to use Indian made goods. Indian made goods and boycott foreign goods. Likewise, you can do the remaining four. Now moving to the first topic of the chapter, which is India's rich heritage and European interests. So we all know India is rich in its heritage. So let's read this. India, renowned for its wealth in ancient times, was famous for its spices, pearls, silk and gold. These goods were in high demand in European markets. So India, जो कि अपनी wealth के लिए एंशिएंट टाइम्स में बहुत जानी जाती थी. इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, पर्ल, सिल्क एंड गोल्ड, एंड दीज गुड्स आर इन हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स. In 1498, Portuguese explorer Vasco da Gama discovered a sea route to India and arrived at Calicut. He secured permission from the local ruler to trade in India. Gradually, the Portuguese established their influence in regions such as Calicut, Goa, Daman and Diu. As the wealth of India attracted the European nations, the Dutch, French and British soon followed in pursuit of trade and dominance. So, in year 1498, Portuguese explorer which was named as Vasco da Gama, उन्होंने एक sea route discovered किया इंडिया में, which was arrived at Calicut. उन्होंने permission ली from a local ruler to trade in India. इंडिया में ट्रेड करने के लिए उन्होंने परमिशन ली. ग्रेजुअली जो पोर्टुगीज थे उन्होंने इस्टेब्लिश करा कुछ रीजन्स, अपना इन्फ्लुएंस कुछ रीजन्स जैसे कि कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव में. एज द वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो वेल्थ है वो अट्रैक्टेड हो गई यूरोपियन नेशंस की तरफ. जो डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी इनको सून फॉलो किया इन परस्यूट ऑफ ट्रेड एंड डोमिनेंस. The next heading is the British East India Company arrival. So now we will talk about how British East India Company came to India. In 1600, a group of 100 merchants from London sought permission from Queen Elizabeth I to establish the British East India Company. This company received authorization from Mughal Emperor Jahangir to trade in India. They initially set up trading centers in Surat, later expanding to Bombay, Mumbai and Madras, Chennai. So in year 1600, एक 100 मर्चेंट्स का ग्रुप लंदन से उन्होंने परमिशन ली क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से कि वो अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करें इंडिया में. इस कंपनी ने अथॉराइजेशन ली मुगल एम्परर जहांगीर से टू ट्रेड इन इंडिया. Then they initially set up trading centers in Surat. Later they also expand to Mumbai and then Madras. The French also established a trading company and set up centers in Chandnagar, Bengal and Pondicherry. However, tensions across between the French and British leading to conflicts with the British emerging victorious. So after that हमारे फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग कंपनी और सेंटर्स को सेटअप किया बंगाल में और पौंडीचेरी में. दिस लेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश. Now let's see what happened after that. British expansion and the Battle of Plassey, which happened in 1757. Now let's talk about how British expanded. The British initially focused on trade, but later
started building forts and maintaining armies, citing the needs to protect their establishment. During this time, Bengal was ruled by Nawab Sirajuddaulah, who opposed British expansion. When he asked them to dismantle their forts and withdraw their troops, the British refused. This led to the Battle of Plassey in 1757, where the British defeated Sirajuddaulah. तो ब्रिटिश इनिशियली फोकस कर रहे थे ट्रेड पे, बट लेटर उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाने शुरू किए इंडिया में और उन्होंने आर्मीज मेंटेन करनी शुरू की. ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल पे कौन रूल कर रहे थे? नवाब सिराजुद्दौला, जिन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन को अपोज किया. और जब उन्होंने अपने फोर्ट्स को विड्रॉ करने को कहा तो ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ इन ईयर 1757, जहां पे ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया सिराजुद्दौला को. With Bengal under their control, the British extended their influence across India, exploiting internal rivalries among local rulers. Over time, they gained significant power and wealth, tightening their grip on the country. तो बंगाल को भी आफ्टर दैट बंगाल को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया एंड दे एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया. और ये इंटरनल राइवलरीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोकल रूलर्स के अमोंग. ऑल्सो उन्होंने सिग्निफिकेंट पावर और वेल्थ गेन की और उन्होंने एक टाइट ग्रिप हमारी कंट्री इंडिया पे बना ली. नेक्स्ट हेडिंग इज exploitation and injustice by the British. Now let's see what is the exploitation made by British and what is the injustice given to us. The British was primarily interested in economic gains. Farmers in Bihar forced to grow indigo used to make blue dye for British textile mills. They had no choice but to sell it at low prices, which led to widespread poverty. Similarly, Indian weavers were compelled to sell their textiles at unfair rates. The British also exploited the Indian cottage industry by purchasing raw cotton at low prices and exporting it to Britain, where it was processed into cloth and sold back to India at high rates. तो ब्रिटिश पहले तो इंटरेस्टेड थे अपनी इकोनॉमिक गेन्स में, जहां पे बिहार में फार्मर्स को फोर्स किया जाता था टू ग्रो इंडिगो, यूज्ड टू मेक ब्लू डाई and they used to make blue dye for British textile industry. They had no choice. They had to sell it at low prices. ऑल्सो इंडियन वीवर्स को कंपील किया गया, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अनफेयर रेट्स लगाए गए. ब्रिटिश ने इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को भी एक्सप्लॉइट कर दिया था. कैसे? बाय परचेजिंग रॉ कॉटन एट वेरी वेरी लो प्राइसेस. तो दे फोर्स्ड फार्मर्स इन बिहार टू grow indigo and sell it to Britain, where it was processed into cloth and sold back to India at high rates. To expand their rule, British introduced the doctrine of lapse, which stated that any kingdom without a direct heir would be annexed to the British Empire. These policies led to widespread resentment among farmers, trade and rulers, fueling the desire to overthrow British rule. तो अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये स्टेट करता था कि कोई भी किंगडम अगर विदाउट अ डायरेक्ट हेयर के बिना, यानी कि अगर उसका कोई आगे सन नहीं है, यानी कि आगे कोई किंगडम चलाने वाला नहीं है, तो उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश अपने अंडर में ले लेंगे. इस पॉलिसीज की वजह से रिसेंटमेंट हुई अमंग फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड रूलर्स, फ्यूलिंग देयर डिजायर टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल. Now the revolt of 1557, the first war of independence. We'll talk about the first war of independence, which was held in year 1857. The revolt of 1857, often regarded as India's first struggle for independence, was initiated by Indian soldiers in the British Army. The immediate cause was the introduction to Enfield rifle, whose cartridges were rumored to be greased with cow and pig fat. Since Hindus considered cows sacred and Muslims regarded pigs as unclean, this sparked outrage among soldiers, leading to an uprising in Meerut. This revolt quickly spread across various regions. So revolt of 1557 जो कि हमारी first war of independence थी, जो कि 1857 में held हुई थी. जो immediate cause था was the introduction of, इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई एनफील्ड राइफल, जिसमें ये रूमर्स फैली हुई थी कि उसके जो कार्ट्रिजेस हैं वो ग्रीस्ड हैं काउ और पिग फैट के साथ. सिंस हिंदूज जो हैं वो काउ को सेक्रेड मानते हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो पिग्स को अनक्लीन मानते हैं, तो ये जो आउटरेज
स्पार्क हुई सोल्जर्स के अमंग, जिसकी वजह से एक अपराइजिंग आई मेरठ में. दिस रिवॉल्ट क्विकली, और ये जो रिवॉल्ट है ये क्विकली स्प्रेड हुई वेरियस रीजन्स में. Leaders like Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmibai, Nana Sahib, Tantia Top, Kunwar Singh and Begum Hazrat Mahal played a crucial role in the rebellion. However, due to a better equipment, British forces and lack of coordination among Indian fighters, the revolt was ultimately suppressed. The British responded harshly, executing and imprisoning many rebels. Bahadur Shah Zafar was exiled to Burma, now Myanmar. This marked the end of East India Company rule, as the British government took direct control over India, appointing a viceroy to govern. So, are some good leaders, great leaders like Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmibai, Nana Sahib, Tantia Top, Kunwar Singh, Begum Hazrat Mahal. These all played a crucial role in this rebellion. Because of better equipment of British forces and lack of coordination among India fighters, the revolt suppressed कर दिया गया और ब्रिटिश ने harshly respond किया और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ने गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था एंड दे अपॉइंट अ वाइसरॉय टू गवर्न. नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म. कैसे नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म का राइज हुआ? लेट्स टॉक अबाउट इट. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ignited a strong desire among Indians to free their nation. However, social issues such as child marriage, caste discrimination and practice of sati weakened the country's unity. Reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Narayan Guru and Sir Ayyad Ahmad Khan worked tirelessly to abolish these practices and uplift society, especially promoting women's education and widow remarriage. तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आया इंडियंस के अमंग कि वो अपने नेशन को फ्री करे. हाउएवर कुछ सोशल इश्यूज जैसे कि चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रैक्टिस ऑफ सती ने हमारी कंट्री की यूनिटी को वीक बना दिया था. कुछ रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक्सेट्रा वर्क टायरलेसली टू अबॉलिश दिस. उन प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए इन्होंने टायरलेसली वर्क किया और सोसाइटी को अपलिफ्ट करा. स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज को इन्होंने अपलिफ्ट किया. Educated Indians realized that the British aimed to keep India backward. They started forming organizations and institutions to demand political and economic rights. तो जो भी हमारे educated Indians थे उन्होंने realize करा कि ब्रिटिश का एम यह है कि वो इंडिया को बैकवर्ड रखे. सो उन्होंने अपनी कुछ organizations और institutions बनाए ताकि वो अपने political और economic rights वापस ले सके. Now next topic is formation of the Indian National Congress, which is also called INC. In 1885, A.O. Hume, a retired British officer, founded the Indian National Congress (INC) to voice Indian concerns. Its first president was W.C. Banerjee, and the organization led its first session in Bombay, now Mumbai. Leaders like Dadabhai Naoroji, S.N. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Madan Mohan Malviya, and Badruddin Tyabji played key roles in promoting national unity. तो इन ईयर 1855 A.O. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने आईएनसी को फाइंड किया ताकि वो इंडियन कंसर्न्स के अगेंस्ट एक वॉइस रेज कर सकें. इसके जो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट सेशन इसका आईएनसी का फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ बॉम्बे में, विच वॉज नाउ कॉल्ड एट मुंबई. लीडर्स लाइक दादाबाई नौरोजी, S.N. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन एक्सेट्रा, इन्होंने की रोल प्रो किया नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने में. Initially, the INC follow moderate methods using petitions and discussions. However, leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, and Lala Lajpat Rai believed that more aggressive actions were necessary. Tilak's famous slogan was freedom is my birthright and I shall have it. So initially INC ने कुछ moderate method follow किए, कुछ petitions और discussions use किए. कुछ लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय बिलीव करते थे कि हमें कुछ एग्रेसिव और हार्श एक्शंस लेने नेसेसरी हैं. तिलक्स फेमस स्लोगन वाज फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है एंड आई शैल हैव इट. Now the next heading is British strategy, divide and rule and Swadeshi movement. So now we talk about British strategy, which was divide and rule and Swadeshi
movement. As the INC gained strength, the British implemented a divide and rule policy. In 1905, they partitioned Bengal, creating East Bengal for Muslims and West Bengal for Hindus to weak unity. India strongly opposed this move, leading to Swadeshi movement, where people boycott British goods and promoted Indian-made products. Women and students actively participated and the British were forced to reverse the partition in 1911. So जैसे INC में स्ट्रेंथ आई, उन्होंने यूनिटी गेन की, तो ब्रिटिश ने अपना डिवाइड एंड रूल इंप्लीमेंट किया 1905 में. उन्होंने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल फॉर मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर हिंदूज, यूनिटी को वीक करने के लिए. इंडिया ने इस मूवमेंट को, इस स्ट्रेटेजी को अपोज किया, विच लेड टू स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट यानी कि इंडियंस ने बॉयकॉट गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया, यानी कि उन्हें लेना बंद कर दिया, एंड दे प्रमोटेड इंडियन मेड प्रोडक्ट्स. वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड ब्रिटिश वर फोर्स टू रिजर्व, और ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि वो रिवर्स कर दें इस पार्टीशन को इन 1911. Now let's talk about revolutionary freedom fighters, the freedom fighters which helped in gaining our freedom. While some leaders advocated non-violence, others believed in armed struggle. Revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, Ashfullah Khan, Khudiram Bose and Ram Prasad Bismil fought against British rule. Some activists like Madam Bikaji Kama, Raja Mahendra Pratap and Maulana Bakrutullah sought international support for India's free movement. तो कुछ लीडर्स नॉन वायलेंस एडवोकेट करते थे, अदर्स जो अदर लीडर्स थे वो आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल एक्सेट्रा. ये सब इंटरनेशनल सपोर्ट ला रहे थे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लिए. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विच हेल्ड बिटवीन 1914 and 1918, many Indians helped the British hoping for political reforms. However, British tightened their control instead of granting freedom, which further fulfilled resentment. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के वक्त बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश की हेल्प की, वो होप कर रहे थे कि उन्हें उनका फ्रीडम मिल जाए, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उन पे अपना कंट्रोल टाइटन अप कर लिया एंड फर्दर फ्यूल्ड रिसेंटमेंट. Now the next topic is India's independence and freedom fighters. India finally gained independence on 15 August 1947 after decades of struggle. Many Indians contributed to the freedom movement, including. So India gained its independence on 15 August 1947 after struggling many years. Many leaders have contributed to it. First is Sardar Vallabhbhai Patel, known as Iron Man of India. He played a key role in uniting India after independence. So Sardar Vallabhbhai Patel, which was known as Iron Man of India, he played a key role. इंडिया की यूनिटी में उन्होंने की रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस के बाद. सुभाष चंद्र बोस, अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हु फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी टू फाइट ब्रिटिश. तो सुभाष चंद्र बोस जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट है और इन्होंने ही आईएनसी फॉर्म की थी. लाला लाजपत राय, a prominent leader known as Punjab Kesari, who along with Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal was part of Lal Bal Pal trio who pushed for aggressive resistance against British rule. तो लाला लाजपत राय जो कि एक prominent leader थे, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था. He along with Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, ये एक पार्ट थे लाल बाल पाल ट्रियो का, जिन्होंने aggressive resistance किया against British rule. Now it's the time of fact and learn. Identify the pictures of these prominent leaders and write their names. So first one, can you identify the first leader is Rani Lakshmi Bai. I hope students you have understood the topics explained by me. Now let's begin with vocabulary. Explorer, a person who travels, एक ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करता है नई नई प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए. रेबिलियन, अ फाइट अगेंस्ट अथॉरिटी और रूल, एक फाइट किसी भी रूल के अगेंस्ट. बॉयकॉट मीन्स टू रिफ्यूज और बाय यूज समथिंग एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, किसी भी चीज को यूज या बाय करने के लिए मना करना, एक प्रोटेस्ट की फॉर्म में. एनेक्स, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ टेरिटरी और लैंड. एनेक्स यानी कि किसी भी लैंड या टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेना. रिफॉर्मर यानी एक ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है. नाउ लेट अस क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर विद समरी पॉइंट्स. The British East India Company received authorization from Mughal Emperor Jahangir to trade in India. The British was primarily interested in economic gains. Then they
gained control in country. Educated Indians realized that British aimed to keep India backward. They started forming organizations and institutions to demand political and economic rights. Now exercise time, think and answer. Moving to the first exercise. Who discovered the sea route to India? Christopher Columbus, Vasco da Gama or Ferdinand Magellan? Option number B. Which battle marked the beginning of British rule in Bengal? Battle of Plassey, Battle of Panipat or Battle of Bokar? Option number A. Who was the first president of Indian National Congress? Mahatma Gandhi, W.C. Banerjee or Bal Gangadhar Tilak? So it was option number B, W.C. Banerjee. What was the main aim of Swadeshi movement? Promote British goods, boycott foreign goods or support the British? So it was boycott foreign goods. Who is known as the Iron Man of India? Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai or Sardar Vallabhbhai Patel? So Sardar Vallabhbhai Patel. Option number C is correct. Now next exercise, fill in the blanks using the words given in the box. Vasco da Gama arrived at Calicut in 1948. The British introduced doctrine of lapse to annex Indian kingdoms. The revolt of 1857 is also called First War of Independence. The Swadeshi movement encouraged people to use Indian-made goods. Next exercise, tick for the true and cross for the false statement. Vasco da Gama was a French explorer. Is it true or false? So, is it true or false? It is false. The British forced Indian farmers to grow indigo, yes, and sell them at lower prices. It is true. The revolt of 1857 was successful in driving out British, no. After that also we have faced many challenges. The Swadeshi movement supported British goods, no, this is also false. So, thank you students, that's all for today. I hope you have understood it well. Now we will meet in our next class with some new chapters. Till the time, keep learning, keep doing great. Bye-bye students.